time in history when world was known as a place of chaos, people were bloodthirsty of each other. Burial of infants, especially girls, was considered an act of pride. Can you believe this? कोई अपने खुद के बच्चे को कैसे जमीन में जिंदा दफन कर सकता है? But the society was indulged in such activities because of ignorance. Believing in superstition was so common, यहाँ तक कि एक कौवे या उल्लू का नजर आ जाना मनहूसियत की लामत समझा जाता था. औरतों को सोसाइटी में कोई हैसियत नहीं दी गई थी. गुलामों के साथ बदतरीन सलूक, गैम्बलिंग, इंटरेस्ट रेट का बहुत हाई होना, क्लास डिफरेंस. सो इन अ नटशेल ये कहना गलत नहीं होगा कि सोसाइटी एंड द पीपल ऑफ दैट सोसाइटी वर एक्सट्रीमली इग्नोरेंट. वक्त के इस नाजुक दौर में अल्लाह अलमाइटी हैज डिसाइडेड टू सेंड हिज लास्ट मैसेंजर टू लीड द पीपल फ्रॉम डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस टू द लाइट ऑफ नॉलेज. हिस्ट्री उन्हें सेवियर ऑफ मैनकाइंड के नाम से जानती है. बिलाशुबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही इंसानियत के निजात दहिंदा हैं और हमारे आखिरी नबी हैं. माय नेम इज सरदार हमजा. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर वेरी फर्स्ट चैप्टर, सेवियर ऑफ मैनकाइंड. सो स्टूडेंट्स, we are going towards explanation of this chapter paragraph by paragraph. Students, before particularly going to the explanation of this chapter, I want you to learn some comprehension tips. Each paragraph consists of two kinds of statements. One is general statements. General statement is only one statement dealing with main idea of the paragraph, or we can say the main theme of the paragraph. Specific statements are all the remaining sentences which circles around the main theme, or we can say specific statements are the supporting ideas in a paragraph.